असिस्टेंट एसजीगैड का पेपर सॉल्व किया था जो 2019 में आया था। फर्स्ट 50 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए। आज हम इस पेपर के नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 51, व्हेन जिम्नास्टिक वर एडेड टू ओलंपिक्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1896 में जिम्नास्टिक ओलंपिक में शामिल हुआ था। एमसीक्यू नंबर 52, रोजर हैज वन हाउ मैनी सिंगल ग्रैंड स्लैम्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 20। एमसीक्यू नंबर 53, मार्टिना हिंजिस is a famous tennis player belongs to। Correct option is C, Switzerland। मार्टिना हिंगिस टेनिस प्लेयर है स्विट्जरलैंड की। एमसीक्यू नंबर 54, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ द नील। करेक्ट ऑप्शन इज ए, इजिप्ट। एमसीक्यू नंबर 55, नेम द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेक्ट ऑप्शन इज बी, हज़रत सोबिया। हज़रत सोबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई माँ थी। एमसीक्यू नंबर 56, ओपापा ग्लेशियर also known as Tasman Glacier is located in। Correct option is A, New Zealand। MCQ number 57, non-permanent non-permanent member of the UN Security Council are elected for a fixed term of। Correct option is B, 2 years। MCQ number 58, Nursing Day is celebrated on 12 मई। 12 मई को नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी न्यूक्लियर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त को एंटी न्यूक्लियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 60, CDAC मीटिंग वाज हेल्ड इन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, Beijing। एमसीक्यू नंबर 61, शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज विद विच कंट्री। करेक्ट ऑप्शन इज डी, चाइना। चाइना के साथ पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट बाउंड्री है। MCQ number 62, identify the last गजवा in which the Holy Prophet participated। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से गजवा में आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कौन सा गजवा था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। करेक्ट ऑप्शन इज ए, गजवा तबूक। MCQ number 63, in the second constituent assembly elected in 1955 the Muslim League formed a coalition government with। Correct option is A, United Front। MCQ number 64, when IMF was established। IMF कब बनी थी। Correct option is 1945 में IMF एस्टेब्लिश हुई थी। MCQ number 65, antonym of subsequent is। Correct option is B। MCQ number 66, in MS Excel you can use the horizontal and vertical scroll bars to। Correct option is B, view different rows and columns। MCQ number 67, in MS Word 2007 which shortcut key is used to switch to outline view। Correct option is Alt Control O। Alt Control O से हम आउटलाइन व्यूज में स्विच कर जाते हैं। MCQ नंबर 68, रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडिएशन किसने डिस्कवर की थी। हेनरी। MCQ नंबर 69, a baby's heartbeat started। Correct option is before he is
born, बेबी के पैदा होने से पहले ही उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 70, हु कोलो हु colonized Argentina in 16th century? Correct option is A. Spain. MCQ number 71, 1818 treaty concession UK and USA to capture was. Correct option is B. Oregon Treaty. MCQ number 72, Indian Act of 1990 provided which type of legislature at the center it place of the Imperial Legislative Council consisting of one house. Correct option is A. Bicameral. MCQ number 73, who invented the World Wide Web WWW with Robert Seeley? Correct option is C. Tim Berners-Lee. टाइम बर्नर्स ली ने WWW इन्वेंट की थी किसके साथ? रॉबर्ट सीली के साथ। एमसीक्यू नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइंड ऑन 8 अप्रैल 1950? करेक्ट ऑप्शन इज लियाकत नेहरू पैक्ट। एमसीक्यू नंबर 75, द G20 is a leading forum consist of. Correct option is B. 19 countries and European Union. MCQ number 76, in the 10th Nabawi year, a very dear and near uncle of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam died. What was his name? Correct option is B. Hazrat Abu Talib Raziyallahu anhu. MCQ number 77, to start slideshow of a presentation. Correct option is B. जब हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारी स्लाइड्स शो होने लग जाती हैं। MCQ number 78, choose the correct meaning of the idiom a Gordian knot. Correct option is C. Difficult or complex problem. MCQ number 79, when 20% of itself added in a number it gives 102, find the number. ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप एक नज़र देख लीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ए 85। MCQ number 80, among the following prophets whose nation was awarded with Mano Salva? Correct option is C. हज़रत मूसा। हज़रत मूसा की कौम को मनोसलवा, हज़रत मूसा की कौम पर मनोसलवा उतरता था। MCQ number 81, what to understand by the term intifada? Correct option is B. Uprising. MCQ number 82, Babusar Pass connects Aptabad and Gilgit. MCQ number 83, a man spends 35% of his income on food, 25% on children's education, and 80% of the remaining on house rent. What percent of his income he is left with? मैथमेटिकल क्वेश्चन, सॉल्यूशन आप इसका देख लीजिएगा पॉज करके, और करेक्ट ऑप्शन इज बी 8%। MCQ number 84, Labrador is a breed of. Correct option is B. Dogs. Labrador डॉग्स की एक नस्ल है। MCQ नंबर 85, पाप का गुनाह किसकी किताब है?
करेक्ट ऑप्शन इज हकीम शजा अहमद की किताब है बाप का गुनाह। एमसीक्यू नंबर 86, उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख किसने तहरीर की? करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर जमील जालबी ने उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख तहरीर की। एमसीक्यू नंबर 87, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने किस हवाले से पहचाने जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ए मज़ा निगारी। मुश्ताक अहमद यूसुफी मज़ा निगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं। हयात जावेद किसने हयात जावेद किसकी स्वाने उम्री है? करेक्ट ऑप्शन इज सी सर सैयद अहमद खान की स्वाने उम्री हयात जावेद है किताब। एमसीक्यू नंबर 89, आतिश कदा किस मशहूर शायर का मजमूआ कलाम है? करेक्ट ऑप्शन इज डी डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर। डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर का कलाम है का शायर का मजमूआ कलाम कौन से? आतिश कदा। एमसीक्यू नंबर 90, फौज की जमा क्या है? फौज की जमा है अफवाज। एमसीक्यू नंबर 91, इलामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? इलामा इकबाल की पहली नज़म है हमाला। एमसीक्यू नंबर 92, शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल के कौन से कलाम में है? करेक्ट ऑप्शन इज बी बांगे दरा। बांगे दरा में शिकवा और जवाब शिकवा है। एमसीक्यू नंबर 93, हमदर्द नामी अखबार किसने जारी किया? करेक्ट ऑप्शन इज डी मौलाना जौहर ने हमदर्द नामी अखबार जारी किया था। एमसीक्यू नंबर 94, तजाहिल आरफाना से क्या मुराद है? करेक्ट ऑप्शन इज डी जानबूझकर अनजान बनना। एमसीक्यू नंबर 95, अंकल अरफी किसका किरदार है? करेक्ट ऑप्शन इज ए हसीना मोइन का। एमसीक्यू नंबर 96, किस उर्दू नकाद ने गज़ल को नीम वैशी सिंफ शायरी करार दिया? करेक्ट ऑप्शन इज सी कलीमुद्दीन अहमद ने। 97, बिनतुल अनब से क्या मुराद है? करेक्ट ऑप्शन इज बी अंगूर की शराब। एमसीक्यू नंबर 98, अकल का अंता गांठ का पूरा से क्या मुराद है? करेक्ट ऑप्शन इज सी बेवकूफ़ मालदार। एमसीक्यू नंबर 99, मूसा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ए पानी से निकला हुआ। एमसीक्यू नंबर 100, तुफुल मकतूब किस तरकीब का मफहूम? करेक्ट ऑप्शन इज बी ना तजुर्बा कार। इन एमसीक्यूज़ के ये आपके पास सोल्यूशन दिया गया है। अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ का डाउट हो कि वो मैंने गलत बताया तो वो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं।